There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. So, this week we have taken a break from our regular programming. We will be doing a live chat with you guys because there are some very important things that I want to discuss with you. It's going to be a serious episode because we're going to be talking about a tragedy that has unfolded in Himachal Pradesh over the past 2 months. We are going to be talking about the reasons behind it, and of course, we will take you through some of News Laundry's original ground reporting on Himachal floods that you can watch, that you can read, and that I hope you have not missed. Because this is going to be a bit of a serious episode, I thought we should start on a light note. इस एपिसोड में आपको गुल्लू या अमन या नविका की फनी चीजें तो नहीं दिखाएंगे हम, तो इसलिए हमने सोचा कुछ फनी आर्टिकल से शुरू करते हैं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा पिछले हफ्ते जो बहुत फनी था। क्राइम तक में ये आर्टिकल छपा था और क्राइम तक इज आज तक का ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सिर्फ क्राइम की न्यूज के बारे में बात करता है। यूट्यूब में भी इसके बहुत फॉलोअर्स हैं एंड इनका वेबसाइट भी है। सो आपको पता है बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया। ही वाज accused in the new violence case because he had put out videos which were very they were basically inciting people to take up, be violent. Basically he said कि हम आ रहे हैं और हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, ये वो। तो बेसिकली उसका नाम आया था न्यू वायलेंस के टाइम कि इसने भड़काऊ भाषण दिए हैं। तो वो पकड़ा गया फाइनली अगस्त 15 को, और क्राइम तक ने ये रिपोर्ट डाली है जिसका हेडलाइन है थुल थुल शरीर वाला बिट्टू बजरंगी लुंगी की वजह से दौड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन स्लो मोशन में दौड़ती पुलिस ने दबोच ही लिया। सीसीटीवी देखो जरा। सो बेसिकली क्राइम तक हैज डिसाइडेड टू फैट शेम बिट्टू बजरंगी एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ हिम इन अ लुंगी आल्सो। एंड इट सेज, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा किसी विलन को पकड़ने के लिए जब पुलिस धावा बोलती है तो मौका और इशारा पाते ही वो पुलिस के बचने के लिए भाग निकलता है, बिना ये देखे कि वो उस वक्त किस हाल में है। तो बिट्टू बजरंगी बेसिकली विलन है और उसको बिना कुछ देखे वो भागने लगा जब पुलिस आई। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखा आजादी वाले रोज, जब फरीदाबाद से नूह के नालायक बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा और बिट्टू उस वक्त लुंगी में था। अपने थुल थुल शरीर की वजह से उससे भागते भी नहीं बन रहा था। सो आई डोंट नो व्हाई क्राइम तक हैज डिसाइडेड कि इट्स नॉट एनफ टू जस्ट से कि बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया, लेकिन ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसका शरीर थुल-थुल था और वो लुंगी में दौड़ रहा था। और आगे इन्होंने ये भी हिंट करा है कि सीसीटीवी की तस्वीर से सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। कैसे फिल्मी अंदाज में पुलिस ने अपने नंबर बनाए। अब ये वाकई पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को दौड़ा कर पकड़ा है या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये कहना मुश्किल है। सो क्राइम तक ने थोड़ा डाउट भी छोड़ा है कि शायद ये सीसीटीवी फुटेज हरियाणा पुलिस ने स्क्रिप्ट किया हो या असली हो, ये हमें नहीं पता। सो दैट इज द कॉमेडी सेशन ऑफ दिस वीक, a really funny headline that I saw on Crime Tak. But I think we should, like I said, this episode is going to be talking about Himachal Pradesh. It's very important to talk about what is happening in that state. आपने इस पूरे हफ्ते विजुअल्स देखे होंगे वहां से बहुत डरावने जो आए हैं। घर ढह रहे हैं, नदी बिल्कुल फुल स्तर पे बह रही है, रोड्स टूट गई हैं, मंदिर कोलैप्स हो गए हैं, लोगों की डेथ की न्यूज आई है बहुत। तो उस पे हम थोड़ा बात करेंगे। आई थिंक फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। देयर इज एन इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल which has given us the death toll so far. This is an article which is under the explained explained segment. It's a very good segment if you like uh, to know a little more on news, which is not just the facts of the case, but if you want an explanation also on what's happening, you should read Indian Express Explained. This article is specifically talking about cloudbursts. What is a cloudburst and how does a rainfall or how does high rainfall gets termed as cloudburst. But in this article, something else caught my attention, which is a table that they have put up in the middle of it, which is showing on your screen right now. इस टेबल का सोर्स है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड इट इज स्टार्टलिंग फिगर्स. So since June 24, 2023, that means June 24th onwards, 327 deaths have been reported in Himachal Pradesh.
And in August 14th and 16th, which means last week or this week, beginning of this week, when Himachal was back in the news, 70 people have died so far. So 347 in June and 70 people in August are dead. 38 people have been missing since June. 6 people recently in the recent floods have gone missing. 318 injured. August में 28 injured. Houses fully damaged 1700. Houses fully damaged in August 386. Houses partially damaged 8,000. Houses partially damaged in August 1,000. If you look at landslides, 113 landslides June 24th, 2023 onwards, and 23 landslides in August. So since the end of June till August, the beginning, mid-August, which is where we are today, the state has seen complete destruction. और 327 is a very big number. I mean, आप किसी भी स्टेट में अगर इतने ज्यादा लोग मरे हैं, और अभी ये तो सिर्फ ऑफिशियल काउंट है, उसके बाद मिसिंग भी हैं, 38 मिसिंग भी हैं. So clearly this is a very, very alarming figure right now. And I just want to point your attention to the fact that the CM has also said that 10,000 crore worth of property has been destroyed, businesses have been ruined, a lot of people have lost their livelihoods completely. You see viral videos, but I think the numbers just tell a very, very starker picture also. To me, at least, I think 300 people dead was just something shocking. And I want to just quickly, before we start talking about Himachal Pradesh and we start talking about what has happened there, and I tell you about the ground reporting News laundry is done, I just want to take your attention to कि इस बीच जबकि 300 लोग मर गए हैं, 70 लोग अगस्त में मर गए, इस बीच न्यूज में क्या चल रहा था. और अगर हम थोड़ा सा कर्सरी लुक बस देखें, जैसे हम रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, बिकॉज रिपब्लिक भारत इज द मोस्ट नेशनलिस्ट चैनल, इज द मोस्ट पेट्रियोटिक एंकर्स, इट इज नंबर 1 न्यूज चैनल. सो वी शुड गो टू रिपब्लिक भारत का प्लेलिस्ट. ये है पूछता है भारत अर्नब के साथ. अर्नब के साथ नहीं होता ये शो. दिस शो इज विद ऐश्वर्या, बट इट्स अ प्राइम टाइम शो. एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि पूछता है भारत में क्या क्या डिबेट्स हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से. सो पहले तो है बिहार पे कि नीतीश 24 में व्यस्त है और बिहार में अपराधी मस्त हैं. तो अपराध चल रहा है बिहार में और जंगल राज चल रहा है और नीतीश को कोई फिक्र नहीं है, वो 24 के इलेक्शंस में बिजी है. सेकंड आ गया कांग्रेस की चुनावी चाल, हिंदुत्व का इस्तेमाल. ठीक है, कांग्रेस को गाली वाला एपिसोड होगा ये. कांग्रेस वर्सेस आप, विपक्ष का सपना साफ. सो विपक्ष इज अ लूजर, कांग्रेस वर्सेस आप चल रहा है. 24 में हार की आहट, कांग्रेस में बौखलाहट. अगेन कि विपक्ष तो बिल्कुल लूजर है और बौखलाहट चल रही है और मोदी नंबर 1 है. फिर आया फिफ्थ जो हम देख रहे हैं इस पे 6 days ago जो उन्होंने एपिसोड करा, दिमाग सुपर हिट, फिर क्यों लगा रहे चिप. आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज अबाउट. एप का जाल, फिटनेस पर सवाल. दिस मस्ट बी सम, I have no idea actually. I don't even want to get into it. But anyway, some fitness, some app, some super hit, some nonsense they're talking about. फिर CRPC, IPC पे इन्होंने एक डिबेट करी है, ठीक है. फिर इन्होंने दोबारा 7th करा है, बहुमत में सरकार, अविश्वास का दावा बेकार. सो 300 लोग मर गए हैं, 70 लोग मर गए इस हफ्ते में. और रिपब्लिक भारत राहुल की झप्पी से पप्पी तक का क्या है पूरी कहानी आपको ये बता रही है. 8th डिबेट दैट वी आर सीइंग ऑन देयर यूट्यूब चैनल. इंडिया की गुलामी पर बीजेपी का सिक्सर. सो अगेन नंबर 1 मोदी जी, बीजेपी ने सिक्सर मारा, बीजेपी ने सबको सिखा दिया. ऑफ कोर्स टूल किट तो आएगा ही. 10th डिबेट इन्होंने करी है, चीन का टूल किट, नफरती मीडिया फिट. नफरती मीडिया, सो नफरती मीडिया इसमें वो मीडिया नहीं है जो लव जिहाद की बात करता है, जो वीडियो गेम जिहाद की बात करता है, जो हर रात हिंदू मुस्लिम करता है. नफरती मीडिया जो मीडिया बीजेपी को नंबर 1 नहीं बोल रही है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू आर भारत. So if you see the entire playlist, and if our producer can just show, just scroll through, you just see the thumbnails. शोभा यात्रा, रूस, यूक्रेन भी आया है. 17th जो thumbnail है उसमें रूस और यूक्रेन की बात भी हो रही है. There is no discussion on what has happened in Himachal Pradesh. More than 300 people dead, close to 400 people dead in 2 months. And this is what our number 1 most nationalist news channel is doing.
Now, if you just, because the flavor of the last 2 months has been सीमा हैदर, आप YouTube पे जाएं और सर्च बटन पे आप रिपब्लिक भारत प्लस सीमा हैदर टाइप करें एंड जस्ट सी आपको क्या क्या थंबनेल्स मिलते हैं रिपब्लिक भारत में। सीमा भाभी बेनकाब, सीमा की खुली पोल, झिंगुर पर सीमा के गांव में गदर, माफी पर महाभारत, ऐश्वर्या कपूर के तीखे सवाल सीमा हैदर से। ऑब्वियसली वो सारे तीखे सवाल सीमा हैदर से हो रहे हैं आजकल, नो तीखा सवाल टू द सरकार। एंड एवरी डे सीमा हैदर पे कुछ ना कुछ ये लोग अपलोड करते हैं, कुछ ना कुछ कहानियां बनाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश के फ्लड्स में का कोई भी प्राइम टाइम डिस्कशन ऐश्वर्या ने तो एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा उनके यूट्यूब के प्लेलिस्ट से। अगर कोई एपिसोड यूट्यूब के प्लेलिस्ट में नहीं है तो दैट आई कैन नॉट वाउच फॉर, बट बेसिकली दैट्स द स्टोरी। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट वन मोर चैनल, न्यूज 18 इंडिया, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे देश की सबसे ज्यादा परवाह न्यूज 18 वालों को होती है, न्यूज 18 इंडिया वालों को होती है। सबसे नंबर 1 पेट्रियोटिक चैनल है, नंबर 1 न्यूज एंकर्स हैं इनके, जो सिर्फ देश की ही बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट देयर यूट्यूब page and you come down, they have a separate playlist, rainfall and flood alert 2023, जिसमें you can see the last update है 1 month ago। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई लास्ट अपडेट 1 month ago, एटलीस्ट दे हैव अ प्लेलिस्ट जिसमें लिखा है चलो बाढ़ बारिश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की हम कुछ तो बात कर रहे हैं। और उसके नीचे अगर आप आ जाओ, उसके बाद चंद्रयान है, ब्रेकिंग न्यूज है एंड सीमा हैदर का भी अलग से प्लेलिस्ट है और उसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने लास्ट अपडेट 12 आवर्स अगो करी है। सो लास्ट अपडेट ऑन फ्लड्स इज 1 month ago, लास्ट अपडेट ऑन सीमा हैदर इज 12 आवर्स अगो। एंड अगेन यू हैव थंबनेल्स लाइक सीमा हैदर के वकील ने मिथिलेश भाटी की लगा दी क्लास। आई डोंट इवन नो अब इस पॉइंट में मिथिलेश कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ द स्टोरी कंप्लीटली। लप्पू सा सचिन, दिस इज द 4th थंबनेल, लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, सीमा हैदर का चढ़ा पारा। और ये बहुत ही सैड से एक वीडियो आया जो वायरल हो गया, वो लप्पू वाला वीडियो। उसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वो नेबरहुड आंटी के पास जा रहे हैं, अपना माइक उनके मुंह पे दे रहे हैं कि भाई आप दोबारा बोलो कि सचिन कितना लप्पू है, कितना झिंगुर है, दोबारा बोलो कितना पतला है, कितना, मतलब बेसिकली जस्ट wanting her to say all kinds of stupid things about Sachin, and that's become national news। और जा जाके उससे वायरल बाइट निकलवाने की कोशिश चल रही है। और आप आ जाओ, देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे इज विद आवर वेनम चोपड़ा, our favorite jihad expert। He has done a 7-minute, at least 2 days ago, he has done a 7-minute feature on Himachal। I think we should just watch it once। दरख्ते पहाड़। और अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश में बड़ी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश बड़ी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 के करीब हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका उनकी है। तस्वीर इतनी खौफनाक है कि देखते ही सिरहन पैदा होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपाई में और राज्यों को वापस पटरी में लाने में कम से कम 1 साल का वक्त और लगेगा। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिमला में जिस तरह की तबाही हुई है वो आज से पहले संभवतः पहले नहीं देखी गई। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का अब तक So like in Manipur, here also we see a pattern कि जब भी कोई वायरल क्लिप आता है तो सारे एंकर्स उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और फिर वो उस पे एक 7 मिनट का शो कर लेते हैं। If you can just go back to that playlist again, देश नहीं झुकने देंगे with अमन चोपड़ा, just want to point our viewers attention to one more thing। We can just show the playlist
There is one second. Just give us minutes. Because I want to point about how flood reporting, if you can call it, flood reporting नहीं कह सकते इसको, वो स्टूडियो में है और बस बता रहे हैं कि यहाँ से वायरल वीडियो आया और दरख्त पे पहाड़ और ताबड़तोड़ तबाही हुई है, ये सब बोल रहे हैं. लेकिन इफ यू लुक एट देयर प्लेलिस्ट, तो उन्होंने 7 मिनट्स तो ये शिमला फ्लड के बारे में बात करा, क्योंकि विजुअल्स इतने कंपेलिंग है कि मंदिर टूट रहा है, लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं, तो वायरल एक फुटेज आ गई, तब तो न्यूज एंकर्स इस पे स्टोरी करेंगे. फिर भी उन्होंने 7 मिनट दिया इसको. उसके बाद पाकिस्तान के यार कितने गद्दार, 11 मिनट्स, मोर देन द फ्लड्स. लेडी पुलिस की एफआईआर, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, 3 मिनट, ठीक है. 20 मिनट्स, गर्व से कहो हम हिंदू हैं. ब्रिटेन में हिंदू होना आज ज्यादा आसान है, because Rishi Sunak recently was seen at this ceremony and he said I am attending it as a Hindu. And Aman Chopra's thesis is कि आज हम यूके में गर्व से हिंदू हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में तो कोई गर्व का हिंदू है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कोई ओपनिंग के टाइम पूजा नहीं होती है, पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे भी नहीं लगते हैं, तो हिंदू बहुत खतरे में है इंडिया में. यूके में देखो हिंदू कितने कितने शान से वो लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हिंदू हैं. दैट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू शो थ्रू दिस डिबेट. बट यू कैन सी 20 मिनट्स ऑन समथिंग लाइक दैट, हिंदू होना गर्व है या गर्व नहीं है, जो भी है. और 7 मिनट ये लोग बात करें फ्लड की, जिसमें इतनी तबाही हुई है, 300 से ज्यादा लोग मर गए हैं. नाउ I want to come to why this is so, but before that I think it's important to talk about News Laundry's reporting. हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट होता है कॉल्ड NL सेना. नाउ NL सेना इज अ प्रोजेक्ट जिसमें हम कोई भी एक रिपोर्टिंग, कोई भी एक चीज इशू लेते हैं जिसपे हम रिपोर्ट करना चाहते हैं. सो फॉर एग्जांपल फ्लड हिमाचल रिपोर्ट या मणिपुर, एंड दिस इज कंप्लीटली 100% फंडेड बाय आवर सब्सक्राइबर्स. सो वी पुट अप अ टारगेट अमाउंट and we appeal for people to fund that project, and then we send our reporters on the ground to do it, because ground reporting costs money. और न्यूज लॉन्ड्री में एडवर्टाइजर्स नहीं है, हम लोग यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट किसी से एड्स नहीं लेते हैं, हम लोग किसी कॉर्पोरेशन से भी एड नहीं लेते, हम लोग किसी PSU से भी एड्स नहीं लेते. तो हमारा जो सारा काम यहाँ चलता है वो सब्सक्रिप्शंस की वजह से चलता है. सो वी अर्ज सब्सक्राइबर्स टू सपोर्ट अ रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, flood reporting on that. When we have collected the amount, then we plan to send our reporters there. Now this was one NL Sena project on Himachal Pradesh floods. इसमें हृदयेश जोशी, जो कि बहुत नोटेड एनवायरमेंट जर्नलिस्ट रह चुके हैं, टीवी के साथ काम किया है उन्होंने, न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया है, वो हिमाचल प्रदेश गए along with one of our producers from News Laundry, आशीष. So two of them went there, they spent time. Remember हिमाचल में क्योंकि इतना तबाही हो गया था, तो काफी कैब्स जाने को तैयार नहीं थी जिन जिन एरियाज में वो जाना चाहते थे, तो काफी थोड़ा सा मुश्किल वाला रिपोर्टिंग था, कॉस्टली भी था, बिकॉज आप स्टेट ट्रांसपोर्ट करके नहीं रिपोर्टिंग कर सकते हैं जगह जगह से. You have to take cabs and stuff like that. So we had an NL Sena project. It was completely funded by our subscribers, and we got reporting from there. Now, I just want to show you the first report that Hridesh, one of the first reports that I want to show you is by Hridesh. So viral videos तो सब दिखा रहे हैं कि देखो कितनी तबाही हो रही है, और वायरल वीडियोस जब भी आते हैं, जैसे आपने मणिपुर में भी देखा था, जैसे कोई वायरल वीडियो आता है फिर सब बात करने लग जाते हैं. लेकिन इस तबाही का रीजन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है. और रिपोर्टिंग जब कोई करता है तो वो वायरल वीडियोस ही बस कलेक्ट करके नहीं ले आता, वो ये भी बताते हैं कि इसका कारण क्या है, गांव में लोग क्या बोल रहे हैं. सिर्फ शिमला से जाके वापस दिल्ली आना इज नॉट द फुल पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश. एक विलेज है सैंज विलेज वैली में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने रिपोर्ट करा है, और कुल्लू से वो 50 किलोमीटर दूर है, और वहां बहुत बहुत तबाही हुई है. विलेज का विलेज ढह गया है, रिवर फुल स्पेट में काफी दुकानें बर्बाद हुई हैं, लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई. तो हृदयेश वहां गए और उन्होंने सैंज वैली में लोगों से बात करी, और वहां के जो लोकल्स हैं, बहुत से लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये फ्लड तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार इतनी तबाही इसलिए हुई है क्योंकि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के जो डैम्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था. उन्होंने पानी छोड़ दिया विदाउट वार्निंग, और बताया नहीं गया, और लोकल्स में बहुत ये गुस्सा था कि ये जो तबाही हम देख रहे हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली जो डैम्स बने हैं उनकी वजह से हुआ है. ये इनका एलिगेशन है. So I think first let's just watch what Hridesh got from there
what were the locals saying there? What did they tell him? हमारी लगभग इसमें 40-45 मकान और दुकानें चलेगी, पूरे शहर की, पूरे बाजार की, और लोगों की इसमें जमीनें भी चलेगी। टेंटों में रह रहे, कहीं रिश्तेदारी में रह रहे, ऐसे ही भटक गए हम लोग। कहाँ जाएंगे? सबके बिजनेस का बंद हो गए, मकान चले गए। ना उनके पास जमीन है, ना उनका घर रहा, ना कुछ रहा। फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। एक साथ सब पानी छोड़ रहे हैं, उससे ही जो बड़े नुकसान इस वक्त हुए इस साल, वो इन डैमों की वजह से इसलिए हुए। ये आवाजें जो आपने सुनी वो कुल्लू से कोई 50 किलोमीटर दूर सैंज घाटी की हैं। ये हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में रहा, लेकिन सैंज घाटी और इसके आसपास तबाह हुए गांव राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर ही रहे हैं। इसकी जानकारी स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए ही हमारे सामने आई। न्यूज लॉन्ड्री की टीम सैंज घाटी में हुई तबाही को कवर करने पहुंची। कुल्लू जिले के इस इलाके में गांव के गांव बाढ़ में साफ हो गए। सैकड़ों लोग बेघर हुए और आज टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। सर, हमारा नुकसान, हमारी लगभग इसमें 40-45 मकान और दुकानें चलेगी, पूरे शहर की, पूरे बाजार की, और लोगों की इसमें जमीनें भी चलेगी। ये टोटल पत्थर जो है अभी पानी में आए, ये नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर आए तो समझो कि कितना पानी आया। इनको डैम पहले खाली कर देना चाहिए था, इनकी वजह से हम सब जो है बर्बाद हो गए। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक त्रेड़ा गांव पड़ता है। वहाँ पे टोटल 7 जो परिवार है वो बेघर हो चुके हैं। ना उनके पास जमीन है, ना उनका घर रहा, ना कुछ रहा। फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। और आजकल तो लोगों के घर में रह रहे हैं और कई तो खेतों में तंबू लगा के रह रहे। इतनी बुरी हालत है। रहने के लिए जगह कहाँ है? रहने के लिए कहाँ सर, कोई बाहर रह रहे हैं, किसी के लिए रूम मिलना मुश्किल है। रोडों पे रह रहे हैं बेचारे, टेंट लगा के। हमारे लिए टेंट मिले हुए हैं और रूम तो है नहीं कहीं भी हमारे लिए। हम बच्चों के साथ ऐसे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे देखो कहाँ जाएंगे हम। ना घर बचा, ना रोजगार बचा। खेती करते थे, खेती से गुजारा होता था, फिर वो सारा चला गया। सैंज घाटी का बर्बाद सुनसान इलाका कभी बड़ा ही गुलजार बाजार होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी तबाह हो गई। इस बर्बादी की जिम्मेदारी ये लोग यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चला रही कंपनियों पर डालते हैं। इन कंपनियों के बांधों से छोड़े गए पानी का सैलाब इनके घर और दुकानों को बहा ले गया। कई छोटी बड़ी परियोजनाओं के अलावा नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC का एक बड़ा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में चल रहा है। संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमेशा ही निर्माण के लिए तोड़फोड़, जल निकासी के मिसमैनेजमेंट, जंगलों के कटान और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए बदनाम रहे हैं। ये सिर्फ NHPC की गलती से ही सब काम हुआ है और आज ये सब मुकर्रर क्यों हुआ? उस दिन रेड अलर्ट किया गया था, येलो अलर्ट किया गया था, इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई कि खाली कर दो, नदी के किनारे जो भी घर है खाली कर दो? वो भी इन्होंने बोला नहीं। और एकदम डंपिंग इनकी है, पहले इनका ये डैम है, उसके बाद इनका डंपिंग एरिया है। डंपिंग एरिया पहले उठ गया, पानी एकदम से छोड़ दिया ना, सबके सब गेट खोल दिए ना, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं और खोल दिए। खोलने की वजह से सिलट भर गई। ये हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्वती नदी है जो आगे जाकर ब्यास में मिलती है। पार्वती घाटी में आज कई जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और उनकी वजह से पानी को एक नदी से दूसरी नदी में डाला जा रहा है पावर हाउस में भेजने के लिए। लेकिन इस कारण अचानक नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और उससे बाढ़ का खतरा भी। यहाँ से ऊपर लगभग 6 बड़े डैम हैं जो 100 मेगावाट से ऊपर के हैं और उसके बाद 40 के करीब छोटे माइक्रो हाइडल्स यहाँ हैं। ये करके रहे हैं कि बरसात में पानी जब इनके डैम में भर जाता है तो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सिस्टम के ये पानी छोड़ देते हैं। असल में होना ही चाहिए था कि प्रबंधन ये होना चाहिए था कि जब जैसे भी अलर्ट आया कि बारिश होने वाली है तो थोड़ा थोड़ा पानी सब डैम छोड़ते, एक दूसरे से इनका लिंकेज होता, संबंध होता, कांटेक्ट होता कि मैं छोड़ रहा हूँ पानी, दूसरा छोड़ता। ये एक साथ सब पानी छोड़ रहे हैं, उससे ही जो बड़े नुकसान इस वक्त हुए इस साल वो इन डैमों की वजह से इसलिए हुए। So you heard the people, what they had to say, locals who have lost their house, they've lost their livelihood, they've lost property. They believe that timely way में warning नहीं मिली जब पानी छूटा गया डैम से. They also believe that rapid construction, throwing of silt in the river, all that has caused
the current devastation there. NHPC से हृदेश ने questions भेजे और पूछा कि what do they have to say about the allegations that it is because of lack of proper warning system. So NHPC has denied. They said that they do not have any role in the current disaster, and they have said that we have shut off Parvati 3 power station in Sanj Valley because there was a lot of silt, and they are saying that is not generating power at the moment. And NHPC has also said that destruction has happened in Guntar, in Kullu and Manali, and it's not correct to say that dams are the only reason why this has happened. Deputy Commissioner of Kullu, Ashutosh Garg, Hridesh also spoke to him, and he said that they have ordered an inquiry into what procedures were followed by hydropower dams in this disaster. And he also admitted to Hridesh that there is a lot of grievance around this when he visited these areas. You must read this piece. It's on newslaundry.com. ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इसका वीडियो भी है, तो you can watch it. And one very interesting aspect of this report that Hridesh has done, he gives a very interesting detail in the piece, which is that basically in India, the Central Water Commission, which is under the Jal Shakti Ministry, they have to do flood forecasting. So this is a central ministry के अंडर जो जल शक्ति ministry के अंडर जो Central Water Commission है, they have to basically alert that there can be a flood, there's a possibility of a flood. And they have several stations across India. This was basically, especially after the Uttarakhand tragedy, it was important to have such a mechanism because 6,000 people had died back then. And the Central Water Commission right now has 199 flood forecasting stations across the country. And these stations are supposed to be calculating river water levels and warn you if there could be a flood. Interestingly, Himachal Pradesh में एक भी CWC station नहीं है. It has so many rivers, the state, Beas, big rivers. Literally, as if you've traveled in Himachal, rivers are everywhere. You will see from streams to major rivers. Water bodies are a very important part of the Himachal Pradesh, landscape. Yet, there's not a single CWC station there. So that's a very big question. कि ऐसा क्यों है कि भाई हिमाचल प्रदेश में कोई flood forecasting का system ही नहीं है. So you can read this report, like I said, on News Laundry. It's a very, very interesting report. And like I said, Hridesh is not just showing you viral videos. कि ये देखो temple ढह गया, ये देखो लोगों की property ढह गई, ये देखो कैसे लोग चीख चिल्ला रहे हैं. He's actually spoken to locals जहाँ पे कोई mainstream media नहीं जा रही है. काफी ये वैली दूर है, जैसे कि आपने रिपोर्ट के बिगनिंग में सुना. हृदेश ने भी बोला कि जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें लोकल मीडिया से पता चला कि यहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है. इसकी खबर नेशनल मीडिया में नहीं आ रही थी, मेन न्यूज़पेपर्स में नहीं आ रही थी, लोकल्स और लोकल मीडिया में आ रही थी. तो ही वेंट देयर एंड ही रिपोर्टेड. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन हाउ we need hydropower. Of course, we need dams, and no one says that we don't need them at all. But how are they being built? Are proper procedures being followed? And warning systems. What are the warning systems? That is very important. अगर locals allege कर रहे हैं कि भाई उनको पता ही नहीं कि कब पानी छोड़ेंगे, तो बहुत बड़ा allegation है जिसको properly जिसकी inquiry होनी चाहिए. And मुझे नहीं लगता कि अमन चोपड़ा at least ने इसके बारे में बात करी होगी. The other important thing, I think, one more thing that Hridesh's report, the second report that I want to show you is roads, national highways की बहुत बात चलती है कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बन रही है, चौड़ी रोड्स बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स बन रही है, तो आप पहाड़ किसी भी सीजन में जा सकते हैं. As a tourist, it's very good for you because you can go to Himachal or Uttarakhand any time of the year. And it's also said that these roads will bring in development, bring in tourism, and all that is true. Roads are very important in the hills. People need roads to connect for healthcare, for education, for tourism. All that is very important. But how are the roads being built? Are they being built scientifically? Are they following proper norms and procedures? और ऐसा क्यों है कि हिमाचल में जो रोड बन रही थी, जो अभी इनॉग्रेट होने वाली थी, वो बिल्कुल टूट गई हैं. और हाईवे आफ्टर हाईवे हृदेश ने ट्रैवल करा और देखा कि हर जगह की यही हालत है कि जो ये नेशनल हाईवेज बन रहे हैं ये टूटते जा रहे हैं और इनमें ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है. So let's watch that report and then let's just talk a little bit about construction of roads in the hills and what role that has played.
सर ये महीने में 2 चक्कर लगते रहते हैं यहाँ पे। तो ये 2 महीने पहले सुरंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बारिश की वजह से जो है रोड सब टूट गया है। सोचा भी नहीं था कभी, इतने सालों में तो हाईवे बन के तैयार हुआ था, ये एक बरसात में ही टूट गया। हिमाचल का एक हाईवे ही नहीं टूटा, तमाम सड़कें यूं ही दरकती चली गईं। ऑल वेदर रोड के नाम पर बनाए जा रहे चौड़े हाईवे बारिश और नदी का जोर नहीं झेल पा रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के दौरे के बाद खुद ये स्वीकार किया। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। लेकिन सवाल कमजोर पहाड़ों और नदी के प्रवाह का ही नहीं, सड़कों के अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण का भी है। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और लर्निंग है जो हिमाचल में रिसेंटली, नॉट जस्ट इन कुल्लू बट जहाँ पे भी हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वहाँ अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहाँ कटिंग बहुत स्टीप है, इवन आफ्टर 4 और 5 ईयर्स वो स्ट्रेटा अभी तक सेटल नहीं हुआ है। और उससे नॉट जस्ट कि वो रोड बार बार ही जो है वो बंद होता है, हैम्पर होता है, बट इट्स ऑल्सो लीडिंग टू लॉस ऑफ लॉट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि जब जहाँ पे ये रोड वाइडनिंग का काम होता है वहाँ पर आपका जेसीबी और जो हमारे मजदूर हैं वही काम करते रहते हैं। अभी तक ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ पे अधिकारी कोई खड़ा हो और उनको बता रहा हो कि किस तरह से आपको कार्य करना है। ट्रेनिंग आपको मिली है, आप खुद से ही करते हो सारा? खुद से करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि पहाड़ को कैसे काटना है? आप धीरे धीरे सीखते हैं ना फिर जैसे। So, like I said, roads are important. We need them to connect to remote areas in India, and people living in those areas also need roads because they need access to healthcare, big hospitals. They also need to travel for various reasons. But how are these roads being constructed? अगर आप बस ये बोलेंगे कि स्पीड पे ध्यान रखेंगे कि अब 4 घंटे का रास्ता 2 घंटे का हो गया है, तो उससे कुछ समाधान नहीं निकलेगा। और इसमें जो हृदेश ने रिपोर्ट करी है, he spoke to a geologist and a professor, YP Sundaryal, who is a professor at Hemwati Nandan Bahuguna University. And Sundaryal ji ने एक बहुत important बात बताई अपने इंटरव्यू में हृदेश से, which you can watch the full thing, but basically he said that when you cut a mountain to make a road, if you cut it at very steeply, तो आप angle of repose एक चीज होती है, you will mess with that. So basically what his point is that you need to cut mountains in a way that is not too steep, और जो angle of repose होता है वो 45 डिग्री या 40 डिग्री तक होना चाहिए. That means you cannot cut it at a 90 degree angle. When you cut a mountain, the angle of repose should be at 45 to 40 degree. You can read more details on that on our report. But basically, he said that there is an unscientific way of cutting roads, cutting mountains when you're making roads. And that is one of the reasons, अगर आप angle of repose से छेड़छाड़ करें तो फिर जो स्लोप है पहाड़ों की वो अनस्टेबल रहती है 3 से 4 सालों तक. तो आपको लैंडस्लाइड्स आएंगी, आपकी रोड छूटेंगी, जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सारा पानी में मिल जाएगा, because you are interfering with a very basic structure of the mountain. So the problem here seems to be also कि scientific application नहीं है. जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना, काफी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें ये एलिगेशन लगाया है कि कोई इंजीनियर या कोई साइंटिफिक तौर पे जो मॉनिटर करता है वो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं होते हैं. इट इज ऑलवेज people who are working hard, the labor force. And like the Himachal Pradesh CM recently said very wrongly, he blamed migrant labor for it, कि ये तो बिहारीज have done this. क्योंकि ये बहुत easy होता है किसी भी गवर्नमेंट को बाहर से जो भी है उनको ब्लेम कर दो. हिमंता बिस्वास बोलेंगे कि फ्लड जिहाद हो रहा है. जो हिमाचल के सीएम है उन्होंने बोल दिया कि बाहर से बिहारी आते हैं, उन्होंने फ्लड्स क्रिएट कर दिए. सो गवर्नमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हमेशा इजी होता है एक एनिमी ढूंढ लो और फिर उस एनिमी को टारगेट करते रहो ताकि आपसे कोई सवाल ना पूछें. और आपने क्या करा, आपकी सरकार के टाइम कैसे काम चला, उस पर कोई सवाल ना पूछे. आप बस एक आउटसाइडर, एक एनिमी बना दो और उसको ब्लेम करते रहो. तो इसी केस में जो रोड्स का हाल हुआ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्पीड पे ध्यान बहुत है लेकिन साइंस पे ध्यान बहुत कम है. एंड द
the projection is always that, oh, look at these glossy roads. You'll see big highways with Nitin Gadkari ji's face talking about what a great job he's done, and he has done a good job. BJP has worked on roads across India. There are things that we should compliment them for also, but in this case, we see these much advertised all-weather roads, these roads that are connecting the hills are just crumbling within one season of rainfall. So this is very alarming. And in this report only, if you watch the whole thing, Ridesh ने एक जगह से रिपोर्ट करी है जो पुराना रोड था, पुराना रास्ता जो पहाड़ी लोग लेते थे, और वो अभी भी ठीक है. तो वो चौड़ी नहीं है रोड, लेकिन वो अभी भी स्टेबल रोड है. तो पतली रोड है, उसमें लोग अपना काम कर रहे हैं, ट्रैफिक आ जा रहा है, काफी ट्रैफिक भी वहां हो गया बिकॉज जो मेन रोड है वो कोलैप्स हो गई है. लेकिन पॉइंट ये है बताने का कि पहाड़ों में ऐसी रोड्स अभी भी हैं जो पुराने टाइम की बनी हुई हैं, जो बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं बनाई गई हैं कि चौड़ा कर दो, 6 लेन कर दो, 8 लेन कर दो. वो पहाड़ों को ध्यान में रखते हुए रोड्स बनाई गई हैं. और जो भी डेवलपमेंट पहाड़ों में हो, कंस्ट्रक्शन हो, वो सब इकोलॉजी को देखते हुए होना चाहिए. सो दिस इज द मेन थ्रस्ट ऑफ Ridesh's 2 pieces. He's also reported on apple farmers, how their lives have come to a halt, the massive loss that they have incurred. He's reported on the destruction. There are total 4 reports that we have put out right now, and you can read all of them. You can, I think we have put it in our, read the full report by Ridesh Joshi. It's in the comment section, so you can check out comment section, and you can see on our screen Himalayan blunder. If you can just go up a little, just up, So I just want to show that this is our NL Sena project. It's called Himalayan blunders. We wanted to raise 4,35,000. We have so far raised 3 lakh. So if you guys can top it up, if you like what we've done, please do it. It will help us to bring you more reports from there. Usually this is the NL Sena format. So we put up a target, and then when we raise the money, we have our reporters go there and bring you ground reports, because none of our reporting is funded by government or corporate advertising. तभी हम इतना डीप डिटेल में जाके सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं. हम बस ये नहीं दिखा रहे कि वो घर गिर गए, वो लोगों ने ये कर दिया, या जैसे कि फेमस एंकर सुधीर चौधरी का हमेशा ये फॉर्मूला होता है, वो लोगों को ही ब्लेम कर देते हैं. ब्रिज गिरा गुजरात में, वो बोलते हैं वो लोगों की गलती है, क्यों ब्रिज पे पहुंच गए. तो वी डोंट, locals, people also do things that the governments allow them to do. So our thrust is always to ask questions of governments and authorities. इसमें हम relief work पे भी reporting होनी चाहिए इस पे, and we will do that also. Some of you have commented in the comment section also. Please tell us how the money is being utilized. So we will follow that up also. And these are the reports that you can read. Hit worse than COVID. COVID से भी बुरा हाल है वहाँ पे एप्पल ग्रोवर्स का भी. नीचे अगर आप आए तो ये हिमाचल के हाईवे प्रगति की नई, एक में थोड़ा ऊपर जाना मिस कर, प्रगति की नई गति या पहाड़ों की दुर्गति. दैट इज द रिपोर्ट बाय रिदेश. इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी. एंड देन यू हैव a village loses everything to floods. Our lives are set back by 25 years. That's what one of the gentlemen has told Ridesh. So you can read all of this, and like I said, this is part of our NL Sena project. If you like our reporting from Himachal, Ridesh is reporting, and if you want more of such reporting, please top up our NL Sena project. And one thing, why we do these lives often is because हम लोग बहुत आप लोग भी कहते हो कि oh, you're talking about other news channels. What does Newslaundry do? So a lot of you are not aware of the kind of stuff that we work on. We have ground reports also. Newsance and tippani are just a small part of what Newslaundry does. We have very elaborate ground reports. मणिपुर से हमने बहुत डिटेल्ड रिपोर्टिंग करी है. आप एक अगर हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो एक पूरा सेगमेंट है रिपोर्टिंग फ्रॉम मणिपुर. Even on our website, we have a segment on Manipur, and we keep putting out updates on it, on Manipur. We have reported very deeply from Meitei side, from the Kuki side, on what is happening in that state, the alarming situation. Himachal pe humne kara hi hai, and if we go on our website right now, we have a very detailed report on NHRC.
1 second, we'll just show you. Yeah, that's our News Laundry website, and here we have a very detailed report on NHRC. Now, NHRC is National Human Rights Commission. जब भी कंट्री में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, एनएचआरसी हैज टू किक इन, दे हैव टू डू they have to look into what has happened, they have to set up commissions, they have to inquire and present reports, and it's a very important part of looking at human rights violations in the country. Now, NHRC में भी political appointments होने लग गए हैं, so people close to the BJP are now heading NHRC, and I just want to point at one important feature in this report which says that May 9th तक NHRC के पास close to 11 complaints आ गई थी मणिपुर से. So by May 9th, they had this, we filed an RTI, News Laundry filed an RTI, and we found that NHRC received 11 complaints by May 9th. These complaints were about mob violence, about arson, and on May 23rd, NHRC had its full commission meeting. So that means the entire NHRC meets and they discuss what are the important things that are happening in the country, what should we focus on. And in that meeting, despite receiving 11 complaints on Manipur, they didn't discuss Manipur. They were discussing illegal immigrants, Museum for Human Rights, and they were discussing forced conversions. जो जिहाद चल रहा है, जो टीवी न्यूज़ में आप सुनते ही रहते होंगे. So they're discussing all this while Manipur is burning. Many of the cases are just disposed of. This report talks about one very interesting data point this report has, that NHRC का expenditure जो है total 154 करोड़ है. और उसमें से 97% जो फंक्शन जो स्पेंड करा है 154 करोड़ में, सैलरीज में, प्रोफेशनल फीस में, सब में दिया है. सिर्फ 4% यूज करा है ह्यूमन राइट रिसर्च, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस, जो कोर काम होना चाहिए ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च, कि बुलडोजर कोट एंड कोट जस्टिस अगर हो रहा है तो उसके विक्टिम्स कौन हैं, ये सब काम है एनएचआरसी का. और ये लोग सिर्फ 4% ऑफ 154 करोड़, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, they are using only 4% of that towards human rights research. Everything else is office, maintenance, salaries, professional fees, travel. And they are not looking into much of the current issues that we face as a country. Now, this report is behind the paywall. It is for our subscribers only. If you subscribe to News Laundry, you can read many reports like this. We have paywall reports. If you subscribe to, and again, we have these reports in English and Hindi. So if you don't understand Hindi, you can read in English. If you don't understand English, you can read in Hindi. Right now, those are the only two languages we function in. But hopefully that covers quite a bit. You have podcasts, NL Hafta, which is our flagship weekly podcast hosted by Abhinandan. It gives you the week of the news, and all the News Laundry editors are part of this. We discuss many things, the news of the week. We discuss our own biases. We discuss our own prejudices. We give our own take on any news event. It's almost 2 hours. That is also behind the paywall. Interviews, like I recently interviewed Priyanka Chaturvedi. I'm going to interview Neerja Chaudhary, whose new book has come out on prime ministers in India and how they make decisions. So a lot of News Laundry interviews are behind the paywall. You can listen to that. So if you subscribe, not only do you support us and you help us do ground reporting, जैसे मणिपुर में हमने करी, हिमाचल में करी, but you also get access to paywall stuff, right? So you can read our reports, which are for subscribers only. You can read our NL Hafta, which is also for subscribers only. You can listen to NL Hafta, which is for subscribers only, and you can watch our interviews. So those are the perks you get. Now we have an independence sale going on. Or one more thing I want to add actually before we go on our sale. इस बार का जो NL हफ्ता है वो outside the paywall है because it was an Independence Day special. So can we just show our podcast NL hafta on our website? So a lot of people can take a taste of NL hafta, and if you like it, then you can start subscribing to it from next week on because it will be behind the paywall. So can we show it on our screen? Yeah, that's NL Hafta. That's our weekly podcast. Now, the latest one hasn't been put. Latest one hasn't been put yet. Where is it? It should be on the home page. Let's go to the home page. Oh, sorry. I'm recording this NL live at 11:46. NL हफ्ता usually 1 o'clock तक publish होता है.
तो अभी जो एपिसोड पब्लिश होने वाला है वो वेबसाइट पे अभी नहीं गया है, बट बाय द टाइम वी एंड दिस live stream, I think by 1 o'clock it will be on our website. Now that episode is free. Tushar Gandhi is part of it. He's going to be talking about Mahatma Gandhi, his legacy, because it's an Independence Day special. So it's completely free for everyone. You guys must listen to that podcast. And if you like it, then please subscribe, because the rest of the podcasts are behind the paywall. So your weekly dose of news and a lot of banter around news is behind the paywall, and you can subscribe to News Laundry. I can take some of your questions for the next 15 minutes, because that's all the time that I have after talking so much. Somebody has said, I'll just read some of your comments. I have got 3. Where have you sent them? Okay. I have 3 questions on my WhatsApp, but my WhatsApp was on airplane mode, so I have not noticed what the questions are. I'll just... Okay. So I'm going to take some of your questions. Daljit Singh says, ma'am, please do reporting on flood situation in Punjab. Due to high rainfall in Himachal, Punjab is facing floods. Bhakra Nangal Dam also do not did right job as they not remove water from the dam. Thank you, Daljit, for your comment. We will try, although we are a small newsroom, and like we said, we are completely ad-free, so it's not always possible for us to do ground reporting, because ground reporting means spending a lot of money, sending reporters from here, travel, stay. So we also have budgeting, so often we can't do ground reporting as much as we would like. But like I said, if you guys want us to do more, some audio issues happening. Hold on, I'll repeat again. I'm going to take questions now. Can you hear me? Yeah. Okay. Sorry. So I'll repeat again. Sorry for that. There was an audio screw up. So I'm going to take some of your questions. Daljit has said, ma'am, please also do reporting on flood situation in Punjab due to high rainfall in Himachal. Punjab is facing floods. Bhakra Nangal Dam, he's saying, has also not done a good job of removing water from dam. Thanks, Daljit, for your question. We would love to report from Punjab. In fact, we would want that we have one reporter stationed in Punjab to report on everything that's happening there. It's a very important state. But we don't always have the funds to do ground reporting because it costs money. Like, you have to send a reporter from Delhi to Punjab. You have to pay for train tickets, stay, travel in Punjab, food and stuff like that. So we have budgets on how much ground reporting we can do in a month. मणिपुर पे करा और हिमाचल पे करा तो काफी हमारा बजट टाइट है. But if you guys want us to do more ground reporting, the best thing is you guys should subscribe to us. Don't do super chat and all, just subscribe. It's 300 rupees a month. We have an Independence Day sale also, which I'll go over by the end of the episode. But basically, if you subscribe to News Laundry, we will be able to do more and more ground reporting, like we did from Himachal or like we did from Manipur, and not just sit in our studios and show you viral videos. So subscribe to News Laundry if you guys want us to do more reporting. We'll definitely keep this in mind. Raghav Dikshit is central government or Himachal government doing anything to promote ecotourism? I don't have the data on it to really look at how much money has been put into development around tourism in an ecological way. But from what I see, I think Uttarakhand, Himachal में बहुत sad story है. The idea is कि आप जितना hotels create कर सकते हैं करें, चाहे रिवर बेड पे क्रिएट करें. जब भी फ्लड्स आते हैं आपको दिखता है इतना सारा रिवर बेड के बगल में जो बिल्डिंग्स हैं वो वॉश ऑफ हो रही हैं. वो बिल्डिंग वहां पहले होनी नहीं चाहिए. हाईवे कंस्ट्रक्शंस, 8 लेन हाईवे कि आप टूरिज्म बढ़ाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं उन रोड्स का क्या हाल है. सो आई डोंट थिंक एफर्ट है एक सस्टेनेबल वे में टूरिज्म प्रमोट करना, लोगों को भी जागरूक करना कि हिल्स में ट्रैवल करना का मतलब क्या है, आप किस सीजन्स में आपको जाना चाहिए. अब ऑल सीजनल हो गया है तो लोग रेन्स के टाइम भी ट्रैवल करते हैं जो कि ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रस्ट बिकॉज यू हैव टू लुक एट how it is sustainable in the long run. And I think no state government has worked towards it. Today it's the Congress government, even they will think in the same way. There have been Congress governments in Himachal Pradesh. The current issue is not just BJP versus Congress जो हर time लोग बना देते हैं. It is really looking at what successive governments have done in Uttarakhand and in Himachal Pradesh, because दोनों states में सरकारें बदलती रहती हैं. So we need to keep that going.
And one second. Yeah. So I said the focus of it should be looking at what state governments have done. And I think tourism, eco-tourism जितना भी हो रहा है वो locals के initiative से ही हो रहा है. जहाँ मैं भी travel करती हूँ और अगर कुछ ecological या sustainable way में होता है वो locals अपने ही intelligence से कर रहे हैं. जैसे कि पत्तों पे खाना देना या प्लास्टिक यूज नहीं करना या कंस्ट्रक्शन ऐसे करना कि वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, ये सब लोकल्स ही इनिशिएटिव ले रहे हैं. मुझे नहीं लगता स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई थ्रस्ट है. Chirag is saying, please do analysis on losses. What sort of packages provided center vis-a-vis packages provided in other states? Amit Malia was very insensitive to make Apple comments. I don't know what comment he made. I'm detoxing this week. Like we said, we are not watching toxic news and we're not following toxic Twitter handles who are putting out misinformation or being insensitive. There is no point making this about BJP versus Congress. It is very important to look at this. The people who have lost their lives and livelihoods or property could have voted for any of the party. And that is not the point of this. And news should at least right now focus on the wrongs that the governments have done, center or state, and what questions have to be asked of authorities, like we have done with the dam authorities, with the highway authorities. This is a very good suggestion, and I will suggest to Ridesh that we must do a follow-up looking at packages, because अक्सर packages में भी बहुत घोटाला हो जाता है. जो money disburse किया जाता है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है. बहुत से disasters में ये होता है कि इतना करोड़ money disburse हुआ है cyclone के लिए या flood relief के लिए और वो locals तक पहुंचता ही नहीं है. So we will follow that up also. There's another question by Kaise. Manisha, with education now in the news over the last few days with both Ashoka University and Unacademy controversy, what do you think about the mass brain drain that's happening? So brain drain has been happening for a long time, and I think, I don't know how related that is to Unacademy and Ashoka University, but it's true that especially if you do not have the freedom to research, then you are going to, once you're at the PhD level, you would want to look outside where there's freedom for researchers and there's academic freedom to ask questions without the fear of losing your job or losing your stature or on FIR. Unacademy के केस में I think कल ही मैं देख रही थी the gentleman who basically said कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए, वो राजदीप के शो में आए और उन्होंने ये क्लियर करा कि मैं अनअकैडमी में ये बात नहीं करी थी, मैंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल में करी थी. तो पर्सनल यूट्यूब चैनल में वो जो भी बोले, अनअकैडमी शुड नॉट हैव टेकन द स्टेप दैट दे डिड, एंड इनफैक्ट ही सिंपली सेड कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें. दैट इज a very normal thing. Most teachers should say that in a classroom, that please vote for educated people or look at the educational profile. There's nothing wrong for demanding that in politics, even though it's complicated. Politics and a good politician may not always necessarily be a highly educated person. It can also be someone who's, rooted and is capable of leading and has shown through their work that they are capable of being elected. So that's a complicated topic, but I don't think उन्होंने ऐसा कुछ controversial बोला कि उनको निकाल दो उनके जॉब से. और एजुकेशन और क्लासरूम ऐसी स्पेस है मुझे लगता है जहाँ पे जम के क्रिटिसिज्म होना चाहिए गवर्नमेंट्स की, नेताओं के बारे में बोलना चाहिए, हर टाइप के, किसी भी पार्टी के नेताओं के बारे में. एजुकेशन, universities, colleges are places of dissent, are places where your mind should broaden. You should be able to question everything, including your teachers. You should be able to ask questions of your teachers also. So I really believe in that kind of an environment, and I think what Unacademy has done is very, very, मतलब डर के उन्होंने ट्विटर ट्रोलिंग से ये कदम उठाया है, जो मुझे लगता है which is backfiring. Any other questions? Let me see. I'll just read some comments. I can't see comments for some reason. Okay. What do you think of the new host of DNA due to DNA ke new host? Yeah, he is an actor, right? I haven't watched it yet. I want to watch it. So we'll probably watch him and see. And maybe there's some difference in Hindu-Muslim. Arya has said that, can you please make a video series on the seriousness of climate crisis, how we as individuals can help? That's a very good idea. We will try and do it. Please don't give us super chat. Please subscribe to News Laundry, guys, because when you subscribe, you can really power our reporting and News Laundry as an organization. So subscribe to News Laundry. Jagriti Singh is saying, I went to Manali in May after 15 years, and when I saw the construction, I knew this climate crisis, there's going to be huge
absolutely right, Jagriti. I've been to Dharamshala as a college kid, and I think about 2 years ago I went there as a professional, and I was shocked to see कि मकलोडगंज में मतलब वो जो छोटी सी 2 रोड्स होती थी जिसमें छोटे-छोटे शॉप्स होते थे, मोमोज के स्टॉल या चाय की दुकान, ते बड़े-बड़े होटल्स बन गए हैं और वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो वो पूरा पहाड़ ही ढह जाएगा. सो लाइक आई सेड अगेन, टूरिज्म देयर इज नो फोकस कि सस्टेनेबल वे में कैसे हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं. होम स्टेज कर सकते हैं या छोटे-छोटे शॉप्स ओपन कर सकते हैं. Just building big ugly hotels and structures so that everyone can make money without any consideration, I think, and without any proper norms in place, building on riverbeds, cutting trees. So it's a very sad state of affair. Please make a video on ragging case happening in India. Okay. Chirag says, Manisha, please make Hridesh report in a long documentary with all voiceovers. Okay. So you want a long documentary from Hridesh? I'll let him know. Pratik is saying, I'll give you a new business model. Why don't you people allow to read your reports after a month? By doing this, people from right wing will get to know what them. I don't think our goal is to attract right wing or left wing or tell people what they're missing. Look, the important thing why News Laundry survives only on subscriptions. And we started, News Laundry was launched in 2012. I joined in 2014. And since then, we have been completely ad-free, right from the very beginning. तो लोग अब donations या subscriptions की बात करते हैं, हम 2012 से बात कर रहे हैं. The age of Manmohan Singh and UPA and all that. And we have been asking and drilling that point again and again that news will never be truly free, because if the government is sustaining your news model, अगर आपका सारा पैसा सरकारी एड से आ रहा है तो आप उस सरकार से क्यों सवाल पूछेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको एड दे रही हो. आजकल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत एड देती है, भूपेश बघेल की, भगवंत मान के बहुत एड्स दिखते हैं, अशोक गहलोत के बहुत सारे एड्स दिखते हैं, योगी जी तो हैं ही एड्स के चैंपियन, और ऑफ कोर्स मोदी जी के बारे में हमें दिखने को मिलता है. तो यही जो सरकारें हैं वो न्यूज को चला रहे हैं. तो अगर एक प्रोडक्ट है और वो चल ही इसलिए रहा है क्योंकि सरकार उनको पैसे दे रही है, तो वो कभी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे. आप कभी छत्तीसगढ़ पे भी कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप वहाँ की माइनिंग्स पे या वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं देखेंगे. जो सवाल पूछने चाहिए आप सरकारों से पूछेंगे ही नहीं. हिमाचल के केस में जैसे देख लें आप, स्ट्रॉन्ग सवाल डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे, रोड्स के कंस्ट्रक्शन पे लोग नहीं पूछेंगे, वो बस वायरल वीडियो दिखाएंगे और चल देंगे क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट के भी एड्स आएंगे उनको. सो वी हैव बीन सेइंग दिस सिंस 2012 कि अगर न्यूज is dependent on government advertising या corporate advertising, अगर अदानी के एड्स की वजह से आपकी दुकान चल रही है तो फिर आप हिंडनबर्ग पे नहीं रिपोर्ट करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी ऑलवेज बिलीव दैट यू नीड people to pay for news. So when you start paying for news, I'll be accountable to you. Then you can tell me, Manisha, you have not reported on this. Why have you not done that? You've ignored Manipur. You have not done a proper report on Himachal Pradesh. So when we start getting money from you people, and when you support our news, we will cater to public interest. That is when news will truly become a public service, because the public is paying for it. That is why we say when the public pays, the public is served. So public interest news can only be done when the public decides to start paying for news. And you can do that by supporting News Laundry. We have, let's quickly, before we end, go to the sale section on News Laundry. Sale. August 15 की sale हर जगह लगी हुई है, हमने भी August 15 की sale लगाई है. So you can choose from 2 hampers, hamper 1, hamper 2. This is because of a special Independence Day offer that we have. So if you look at the hamper 1, if you guys can show our audience hamper 1, you get NL cap, you get laptop stickers, you get करारे चने mug. करारे चने mug यहाँ है नहीं, but ऐसा ही mug है जिसमें करारे चने हैं, fridge magnets, नक्सलबाड़ी comic, और आपको 1 month सब्सक्रिप्शन मिलेगा. और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप हफ्ता सुन सकते हैं, आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज भी हमारे जो पे वॉल में वो देख सकते हैं. यू कैन रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. सो यू गेट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट न्यूज. You get to have really cool merchandise like our caps and our comics and our fridge magnets and our karare chane cup, and you also get subscriptions with it. Then we have hamper 2. If you can click on hamper 2, which is amazing. It has so many more things. It's for 5,200. You will get
5 1-month subscriptions. 5 into 1 month meaning what? Like you get 5. So basically 5 into 1 month means that you'll get 5 subscriptions, and these subscriptions you can give to other people also. But in that 1 month subscription, you can get a lot of, you get access to everything behind the paywall. You get comics, again, Karare Chane mugs, fridge, car stickers, laptop stickers like this. You can see my laptop stickers that I have. So you can pay for independent news and you can proudly display it on your laptop. These are our 2 Independent Day sales. You can check them out. The offer is valid till 20th August. We may extend it by the end of this month if we feel like it, but no such promises so far. So it's 19th August, guys. You just have 1 more day to avail this hamper. Please do it. And this is important because, like I said, we are not taking advertisements from anyone. We are just dependent on you guys to support us. So please support us by subscribing to News Laundry. We don't need super chat. We don't need, just money on YouTube. We need you to log on to newslaundry.com/subscription and subscribe. Newsance की team जो है हमारी, we are total about 5 people. We have researchers, producers, editors, director who works with us. Show हम हमेशा shoot करते हैं Thursday morning and it's out by Saturday. So we literally for 48 hours we are working like 24/7 to bring you that show. It's made in 2 days. That's really amazing, guys. I'd like to pat myself on the back. But we do all this. And again, like this is done without any advertising. We can really call out anyone we want to. We can talk about any issue we want to because we have no pressure. We're not scared of anyone because we know that people are supporting us and people are backing us. So a lot of times you people say, oh, so brave, आपने ये बोल दिया, oh, so brave, आपने ये दिखा दिया. और ये bravery, हम लोग brave नहीं है, लेकिन लोग हमें support करते हैं, तो ये confidence है. हम जानते हैं कि लोग हमें support करते हैं, हमें subscribe करते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबली और फेयरली बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं और कर सकते हैं एज जर्नलिस्ट, जो बहुत सी दूसरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद एड मनी. सो yeah, that is what this session is mostly about, to tell you about the News Laundry news model, which is completely ad free, 100% Shuddh Desi Ghee, driven by subscribers and subscription. It's to also tell you that we do ground reports from Manipur, from Himachal, from New. So please go to our ground report section on YouTube. Watch our ground reports. That is very important. Some issue in there. Some audio issue. Okay, can you hear me again? Some audio issue. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, fine. Sorry guys, we keep having audio issues, so I keep disappearing. But I'll repeat that because maybe some of you have missed it and I don't want you to miss it. So the purpose of these live chats is to drive home the point that we are completely ad-free, Shuddh Desi Ghee, 100% driven by subscription, not Patanjali Desi Ghee ad, not Lux Cozy Underwear ad, not Dollar Underwear ad, not Bhupesh Baghel's ads or Modi ji's ads. Completely driven by subscriptions, and we are able to do everything. जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमें पता है कि जब तक लोग सब्सक्राइब करेंगे तब तक हम चीजें कर पाएंगे. The day we don't get subscriptions, we'll have to shut shop because we will not take advertisements. And we will not take advertisements because we want to be free, fair and independent, right? अगर हम किसी से ads लेने लग जाएं तो फिर हमें उनकी भक्ति पे लगना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है, तो हमें भी गुणगान गाने पड़ेंगे या हम कुछ सेंसर करने लग जाएंगे और वो सब हम बिल्कुल नहीं करना चाहते. आप लोग बहुत टाइम कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आप ब्रेव हैं, आप कितना कुछ बोल लेते हैं. kudos to you. It's not kudos to us, it's kudos to our subscribers who support us, because of which we are able to say and do the things we do. So subscribe. Please check out all our ground reporting. YouTube पे एक separate section है News Laundry में, which is just our ground reports from Nu, from Manipur, from Himachal. We have done ground reports during the Odisha train accident, during the Uttarakhand controversy of so-called land jihad. Of course, Tippani is there, Newsance is there. You can also please check out NL Hafta. That is again a separate YouTube playlist on our YouTube channel. You can एक छोटा हफ्ता होता है जो फ्री होता है, जो आप YouTube में सुन सकते हो, और अगर आपको full version सुनना है तो you have to subscribe to News Laundry. So check out NL Hafta. And
that is about it. Sorry for spamming emojis, but it's addicting, Kuldeep Kaur is saying. That's okay. Thank you guys for tuning in. We'll be back next week with regular programming of TV Newsance. One second, my producers are telling me to look at some private chat. Oh, yes. There is one more important thing that I missed, but I want to show you guys another video, and then we'll wrap up after this. But just watch this video and then come back to me. आप है ना यहाँ पे आ जाओ, मैं एक गाड़ी दिखा दूंगा ना, जो देखो जैसी ये आ रही ना, वो कटी हुई गाड़ी इधर। अभी आने दो, गाड़ी आएगी अभी। जैसे ये कंटेनर आ गया, ये अभी तो गायों का नहीं है, गोवंशों का होता तो जैसे ये बंद बॉडी का कंटेनर है, ऊपर से कटा हुआ मिलता, ऊपर से मतलब उसमें इतने चौड़े चौड़े होल करा रखे होते जिससे कि गायों का सांस लेने में दिक्कत ना हो और गायों का पता लग जाए। तो ये जा रहा है, ये सीधा रोड मेवात जा रहा है। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं मेवात जा रही है। ये रोड है जो आप परली तरफ देख रहे हैं, ये रोड सीधा पंजाब सोनीपत रोहतक से आता है। दूसरा इधर जो देख रहे हो आप, ये छोटे रोड है, सिंगल रोड। जैसे मानेसर से, गुड़गांव से, कहीं से भी गाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ टोल पे रुकेंगी। जब भी हमें सूचना मिलती है या जब भी हम खाली टाइम में रहते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर गोवंशों की तस्करी इसी रोड से होती है और ये रोड सीधा अपने मेवात जाता है। तो जितनी भी गाड़ियाँ होती है, छोटे टेम्पो हो गई, टाटा हो गई, कैंटर गाड़ियाँ हो गई, बंद बॉडी के डब्बे हो गए, तो ऊपर से हमें गोवंश दिख जाते हैं कि भाई इसमें गोवंश भरे हैं। गोवंश है तो आगे हम जाम लगवा देते हैं पुलिस से मिलकर, जिनको हम काबू कर लेते हैं और गाड़ी को पकड़ लेते हैं, गो तस्करों को पकड़ लेते हैं और गोवंशों को बचाकर गौशाला में भेज देते हैं। और बढ़िया क्या करवाओ, शूटिंग चल रही है भाई। ये कौन सी शूटिंग है भाई? आप अंदर से कंप्यूटर हैं? किस चीज की शूटिंग करें? हमारी शूटिंग नहीं आ रही है, हम ना बेरो कहाँ शूटिंग कर ले। ए समझाओ नहीं, कोई बात नहीं छोटू, अभी तू नया है, हमारी फिल्म नहीं पता तेरे को, हमारी फिल्म बहुत बड़ी है। So that was Monu Manesar. He is absconding. No one knows where he is, or people know where he is, but he's still not been arrested despite being wanted in cases of murder. Even in the new violence, his name has come up. तो बिट्टू बजरंगी को तो पकड़ लिया, लेकिन मोनू मनीसर को अभी तक नहीं पकड़ा है। इसका क्या रीजन है, ये तो हमें हरियाणा पुलिस से ही पूछना पड़ेगा। But this is a trailer of a short documentary that independent filmmakers have made. They followed Monu Manesar in this documentary. You get to know कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं, इनका गैंग जो है कैसे लोगों को, कारों को रोकता है, क्या क्या इनके पास टेक्नोलॉजी है जिससे ये लोग सो कॉल्ड गौ रक्षा करते हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने मूवी बनाई है और हम इस मूवी को रिलीज करना चाहते हैं। एंड वी हैव अ स्पेशल NL Sena project also. If you are on our website, you can see it. It's Manu Manesar's video profile. And if you contribute to this NL Sena, we will be able to release this full documentary for our subscribers and of course for people who have contributed to this project. It's a very compelling watch.
and it gives you an insight into who this person is and how the gang operates. So you can check out our latest NL Sena project on Monu Manesar on our website and contribute an amount that you'd like. You can contribute starting from 1,000 rupees to 50,000 rupees. When you contribute, you don't not only contribute to the project, but you also get subscription with it. So इस contribution में आपका subscription भी included है News Laundry का. So you can choose an amount from 1,000 to 50,000 and support this project. Just want to quickly take two questions. Like two people have asked. One is Jaswinder Singh Narula, who has said ki bhai, why don't you take YouTube ads? And one is Paper O Mihir, who said ki share your thoughts on how mainstream media, ad media can change and become unbiased media. So why we don't take YouTube ads is because see, अगर YouTube ads जो होते हैं, एक तो उनका भी इकोनॉमी ऐसा होता है कि आपको हिट्स चाहिए, उतना आप पैसा कमा सकते हैं. और अगर हम हिट्स चेज करेंगे तो हमें भी हर तीसरा थंबनेल सीमा हैदर पे बनाना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा सकते हैं. It is not a sustainable way of doing news. Because you will have to chase clicks, you will have to chase hits, and in doing that, you will keep showing Seema Haider again and again, like news channels are doing these days. Yeah, so लप्पू सा ये हो गया, झिंगुर सा वो हो गया, ये इतना पतला है, या सीमा ने अब ये कर दिया, तो हमें भी यही करना पड़ेगा. If you want to make money out of YouTube, we don't want to do that. So our YouTube is completely ad free. When you watch a News Laundry video, you don't get ads because we have disabled ads. कभी-कभी जब ads दिखते हैं, वो because हम कभी कुछ music use कर लेते हैं, तो जो म्यूजिक का ओनर होता है वो हम पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं और एड्स चला सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर आउट ऑफ यूट्यूब. एंड व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन मेनस्ट्रीम मीडिया डू? लुक, आई थिंक broadly mainstream media, because of its dependence on ads, there will always be conflict of interests within the media, because आपके ओनर्स कोई हैं, उनका पॉलिटिक्स कुछ है, या उनके बिजनेस इंटरेस्ट कुछ हैं, या आपके पास एड मनी आ रहा है जो आपको सस्टेन कर रहा है. तो एक चीज हो सकती है मेन स्ट्रीम मीडिया को इम्प्रूव करने के लिए, वो है ट्रांसपेरेंसी, कि हम फुल डिस्क्लोजर्स दें कि हमारे जो ओनर्स हैं वो कौन है, ओनर्स का पॉलिटिकल लिंक है तो क्या है. और एज अ व्यूअर आप थोड़ा एक्टिवली मीडिया को कंज्यूम करें, पैसिवली नहीं. जब आपको कुछ लगता है कि गलत हो रहा है टीवी न्यूज पे, तो आपको बोलना चाहिए कि अगर हिमाचल में 300 लोग मरे हैं और एक एंकर बस जिहाद 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 कर रहा है या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो यू शुड बी एक्टिव कंज्यूमर्स एंड यू शुड टेल TV news channels or those anchors. Today it's very simple to do it. You can just tag them. So more and more, if you do that, if you shame them, I think the best way is to shame toxic television news anchors to stop doing what they're doing. This is not to say कि reporters अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. आज तक में News18 में बहुत अच्छे reporters भी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, फ्लड पे रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिलता है, उनको प्राइम टाइम पे स्पेस नहीं मिलेगा. प्राइम टाइम पे सुधीर ही आके आपको जिहाद का चार्ट दिखाएगा. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेन स्ट्रीम मीडिया में. तो आप अच्छी रिपोर्टिंग इनकरेज करें. किसी भी चैनल में किसी रिपोर्टर ने अच्छा काम किया तो उसको टैग करके बोले थैंक यू फॉर योर रिपोर्ट, प्लीज डू मोर ऑफ दिस. और जब एंकर्स गंदा काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिहाद करते हैं, तो आप उनको टैग करके उनको शेम करें, ट्रोल नहीं करें, अब्यूज नहीं करें, लेकिन आप बोलें कि ये न्यूज नहीं है, जो आप दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं. सो दैट इज वन वे दैट वी कैन हेल्प mainstream media improve. Thank you so much guys for watching this Newsance live. We've spoken almost for 1 hour, so now we'll shut up and hope you guys have a great weekend. A lot of you are thanking us. Thank you for saving democracy. Atul sir, Manisha ma'am, thank you. आप हिंदी के शब्द कम बोलती हो और इंग्लिश ज्यादा, ऐसे क्यों? क्योंकि मोस्टली मैं इंग्लिश में ही जर्नलिज्म करी है, तो नेचुरली मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जाता है. लेकिन आई ट्राई कि कभी कभी हम शुद्ध हिंदी में शोज करें, शुद्ध तो नहीं लेकिन हिंदी में शोज करें, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन वॉच अस. बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. रियली इट मीन्स अ लॉट टू अस. Those of you who subscribe to us, that's the best thing you can do for democracy in India today. Subscribing to independent media, News Laundry, of course, but any other channel that you may also like, because today news is increasingly becoming part of a machinery that wants to systematically undo all the rights that we have won as a democracy. यहाँ पे जर्नलिस्ट को जेल भेजो, उस पे चेयर करते हैं एंकर्स, किसी का बुलडोजर से घर गिरा दिया, उस पे भी तालियां बजती हैं. लोगों को टुकड़े टुकड़े बोलना, एंटी नेशनल बोलना, सिर्फ कि वो सवाल पूछ रहे हैं, इस पे भी लोग खुश होते हैं. तो ऐसे माहौल में कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया जो आपके सवाल
उठा रही हों, जो गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जरूर सपोर्ट करें. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर डेमोक्रेसी. Thank you for supporting News Laundry. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.